Today we will see the SCD implementation through Talend, how we can implement SCD type 1, type 2 and type 3. Okay, so an example we are taking, and step by step the document also I have created here. I'll share it with you. So you also can create the SCD implementation for type 1, type 2 and type 3. Interviewer mostly ask you about the SCD implementation, the process and the components, which components you will use and how you will implement the SCD. They wants to know each and every step. Okay, you have to explain the SCD. Mostly they will focus on type 2, so you can explain accordingly. Okay, so first we need to create the source table and then target table. अपने पास पहले source table चाहिए, then target table. ठीक है. I already have all the queries here. So from SRC customer we are going to read the data. Okay, SRC customer अपना source table रहेगा. इसमें से हम लोग डेटा पिक करेंगे एंड कौन से टेबल में लोड करेंगे, डिम कस्टमर. ये सोर्स कस्टमर है, इसके अंदर ये सारे कॉलम्स. ठीक है, नेचुरल की कस्टमर आईडी जनरेट हो रहा है, नेम ऑफ द कस्टमर, एड्रेस ऑफ द कस्टमर, मेंबरशिप लेवल ऑफ द कस्टमर. एक मेंबरशिप जनरेट हो रहा है उसका. ठीक है, उसमें भी लेवल्स रहेंगे आपके. कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम उसका, एंड देन करंट एड्रेस एंड मेंबरशिप. What's the membership level he is having, silver, gold, whatever. ऐसे कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स हमने रखे. ठीक है. You directly can copy these SQL queries from the document and you can run the queries, and once you have source table, target table, then we can run the flow for SCD type 1, type 2, whatever implementation. ठीक है, मैं पहले तो जॉब क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, क्रिएट अ जॉब SCD टाइप 1, 2, 3. एक ही जॉब में हम लोग सारे SCD टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है. I have created so let's create a table here first. ठीक है, यहाँ पे हमें डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने हैं. जॉब मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है. ठीक है, लेट मी गो टू द डॉक्यूमेंट, लेट्स पिक अप ऑल द क्वेरीज हियर. क्रिएट टेबल. पहले मुझे सोर्स टेबल क्रिएट करना है जहाँ से मुझे डेटा पिक करना चाहिए. राइट, सॉरी. सो बिफोर क्रिएटिंग दिस टेबल, लेट मी चेक वेदर दिस table is present or not, or let me drop table name. ये टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ पहले, क्रिएट करने से पहले. आई माइट हैव क्रिएटेड दिस टेबल ऑलरेडी, तो उसके लिए मैं पहले ड्रॉप कर दिया. ठीक है, टेबल हैज़ बीन ड्रॉप्ड हियर. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सोर्स टेबल, सोर्स कस्टमर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, करंट एड्रेस एंड मेंबरशिप लेवल. ये सारे डिटेल्स हैं. नियर अबाउट रियल टाइम में जैसे कॉलम वगैरह होते हैं वैसे ही मैंने क्रिएट किए हैं. ठीक है, टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड. लेट्स चेक दी टेबल हाउ इट इज़ गॉट क्रिएटेड. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सोर्स कस्टमर SRC अंडरस्कोर कस्टमर. टेबल क्रिएट हो गया. अब इसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने. राइट, लेट मी गो टू दी डॉक्यूमेंट अगेन. ये सारे इंसर्ट स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, जैसे कि दिस SQL कॉपी कोड फ्रॉम हियर इंसर्ट टू टिल दिस आई विल बी कॉपिंग. ठीक, लेट्स कॉपी दिस, गो टू SQL डेवलपर. आई कैन रिमूव दिस एंड पुट दीज क्वेरीज. ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4. राइट, इंसर्ट इनटू ये सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, 101 एंड देन ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास.
Now we only have two records here. Example, updating customer address and membership in next cycle. फर्स्ट साइकिल में मैं सिर्फ पहले दो रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा, ठीक है। अपडेटेड, ये दो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए. फोकस ऑन व्हाट क्वेरीज आई एम एग्जीक्यूटिंग. आई एम इंसर्टिंग दीज टू रिकॉर्ड्स 101 एंड 102. यहाँ पे भी 101 102 ही है, लेकिन ये अपडेट करके हम लोग एस का साइकिल एग्जीक्यूट स्टार्ट करेंगे. जैसे कि पहले एड्रेस कुछ अलग था, यहाँ पे एड्रेस कुछ अलग है, ठीक है. एड्रेस चेंज होने के बाद अगर मैं टाइप 1 का साइकिल एग्जीक्यूट करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन जो भी मैंने टैलेंट में करना है, तो उसके बाद एसरी टाइप 1 कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है. आई हैव इंसर्टेड दीज टू रिकॉर्ड्स, दीज टू आई एम नॉट रनिंग राइट, ठीक है. अब देखते हैं टेबल में कितना डेटा है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम src_customers, ठीक है. लेट्स रन दिस. नाउ वी हैव 101 एंड 102, जॉन एंड जेन. इनका एड्रेस है 123 ELM ST, राइट. इसका OCAST, ठीक है. सिल्वर एंड गोल्ड मेंबरशिप है इनके पास, दो कस्टमर्स, ठीक है. नाउ एसरी टाइप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सोर्स से डेटा आ रहा है, जिस कॉलम पे हमने एसरी टाइप 1 इम्प्लीमेंट करना है, इन दैट केस टाइप 1 में क्या रहता है, हम सिर्फ करंट डेटा मेंटेन कर रहे हैं. सोर्स से जो भी डेटा आ रहा है डायरेक्टली विल बी अपडेटिंग इट इनटू द टारगेट, राइट. इफ the record is not present into the target, then in that case what we are going to do, we will insert those records. How? Let's check. उसके लिए पहले हमारे पास टारगेट टेबल क्रिएट करना चाहिए. सेकंड स्टेप इज क्रिएट द टारगेट टेबल विच इज dim_customers. Here is the query to क्रिएट द टारगेट टेबल. इट मीन्स डायमेंशन टेबल क्रिएट करने का क्वेरी है, ठीक है. लेट्स कॉपी दिस. what are the columns we have? This is the surrogate key column, surrogate key which is set to as auto incremented. to auto incremented value यहाँ पे पुट करने के लिए हमने एक सीक्वेंस जनरेटर बना के रखा है. आई विल शो यू दैट, ओके. एज 11G won't support any identity column here, so that's why हमने सीक्वेंस जनरेट करके वो किया है, ठीक है. अभी नए जितने भी सारे डेटाबेसेस है, पोस्टग्रेस वगैरह, उसमें यू कैन डायरेक्टली क्रिएट द आइडेंटिटी कॉलम और डायरेक्टली वो सीक्वेंस जनरेट करने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं है. सो कस्टमर डिम की नंबर, ये सरोगेट की है. why we need surrogate key? In the last session I already explained that, but I'll explain once again while executing the flow. Customer number which is coming, customer ID which is coming from source, customer name coming from source, current address coming from source, membership level also coming from source. Previous membership level is not coming from the source, right? Or the membership level is coming from source. It can be current or it can be previous. How we can update these values, that we will see while executing the type 3 flow. Start date and end date I have explained. These are type 2 related columns. मतलब type 2 column जो भी है, जैसे कि what is the type 2 column? Here the type 2 column, current address, right? current address, जो भी previous address है वो उसके लिए नए records बनते जाएंगे. नया जब भी एड्रेस अपडेट होगा कस्टमर का, देन इट विल क्रिएट न्यू रिकॉर्ड हियर. एंड हर एक रिकॉर्ड के लिए स्टार्ट डेट एंड एंड डेट रहेगा. फॉर एग्जांपल, कस्टमर वाज लिविंग इन पुणे फ्रॉम 2001 to 2010 ऑन पर्टिकुलर डेट एंड पर्टिकुलर ईयर, राइट. उसका पूरा ट्रैक यहाँ पे एसरी टाइप 2 कॉलम का रहेगा. एसरी टाइप 2 इज़ नथिंग बट मेंटेनिंग अ फुल हिस्ट्री, ठीक है. वहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट रहेगा, ठीक. एंड this is also a type 2 related column. This is also we are generating here in the ETL process only. Is current, it means is it an active record or not? Flag indicating current
or historical. If this column having y value, it means that is the current like record. It means it is current active record. This is just a constraint on the primary key column. This is a primary key column we have declared here. यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं उनमें से कुछ कॉलम्स ETL फ्लो में हम लोग बना रहे हैं. जैसे कि इसको हमने डेटाबेस लेवल पे सीक्वेंस जनरेटर से बनाना है मुझे. This is coming from source. This is also coming from source. This is coming from source. These two somewhere coming from source. These are created in the ETL flow only. अब इनको मुझे क्रिएट करना है इस टेबल को. पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अगर है पहले से मेरे पास तो. ड्रॉप टेबल डिम कस्टमर ड्रॉप्ड. ठीक है. लेट मी रन दिस टू क्रिएट द डिम कस्टमर टेबल. डिम कस्टमर टेबल हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है. So next step is I have to create the sequence value. जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है डिम टेबल में, मतलब I will show you the data. Select star from dim customer. How many columns we have? Whenever we are inserting any record into this table, this is my primary key column. This column should have an unique value for each and every record, right? उसमें आप ETL flow से भी values insert कर सकते हो. Primary key always unique, right? It never been duplicated. For each and every record present in the dimension table, we are creating one primary key column and we are handling it at the database level only. हमें इस कॉलम में कुछ वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे इसमें हमने वैल्यू कहाँ से इंसर्ट करना है? फ्रॉम दी सीक्वेंस जनरेटर ओनली. आई विल बी क्रिएटिंग दैट सीक्वेंस जनरेटर हियर. सो क्रिएट अ सीक्वेंस फॉर कस्टमर डिम की. उस अकेले एक कॉलम के लिए मैंने सीक्वेंस बनाना है. ठीक है. सो दिस इज द create sequence syntax. Create sequence dim customer dim key sequence इस ऑब्जेक्ट का नाम है. सीक्वेंस की विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1. जब भी आप रिकॉर्ड कोई इंसर्ट करते हो विदाउट हैविंग वैल्यू फॉर दिस कॉलम, वहाँ पे स्टार्ट में जब कोई रिकॉर्ड्स नहीं है डिम में, यहाँ पे 1 आएगा. हर बार कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 and it is nowhere cached. Okay. So if I going to create this, may produce an error because I might have created this earlier. So I'll be dropping the sequence. Drop sequence. Drop sequence. सीक्वेंस का नाम मैंने ड्रॉप कर देना है इसको. ठीक है. Let me create the sequence now. Create sequence name and all the parameters here. Sequence has been created. Now sequence has been created, but at the time of execution it has to be triggered for each and every record. It has to be triggered automatically. The value should be inserted there, right? अब तो sequence तो generate कर दिया object, लेकिन how you will call that sequence? How you will call that sequence on particular instance? मतलब कोई तो trigger point चाहिए, right? So here is a trigger. How trigger point will be executed? Now create or replace the trigger dim customer trigger before insert on dim customer. For each row begin with this value, right? Whenever you will be having a new record getting inserted into the dim customer table, then call to this sequence dim new dot dim customer की. इस कॉलम में
वैल्यू जाना चाहिए कस्टमर डिम की सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल, इसका नेक्स्ट वैल हर टाइम उस टेबल में इंसर्ट होना चाहिए. दिस इज एन ट्रिगर पॉइंट फॉर योर सीक्वेंस. लेट मी रन दिस. ओके, नाउ सीक्वेंस जनरेट हो गया, ट्रिगर भी हमने बना दिया. वो सिर्फ उस एक कॉलम के लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता रहे, इंक्रीमेंटेड बाय 1 ईच टाइम. ओके, दैट कैन बी क्रिएटेड थ्रू ETL प्रोसेस ओनली, राइट. लेकिन उसके लिए हमें और एक कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा हर टाइम, एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन इट एट द डेटाबेस लेवल ओनली. ठीक है, हमने ट्रिगर भी बना लिया अभी. ठीक है, so next process is, with this sequence trigger in place, every time a new row is inserted into the dim customer table, the customer dim key will automatically be generated. Okay. Step 2, talent of job design for SCD type 1, type 2 and type 3 implementation. Now अब talent में हमें क्या क्या करना है. पहले तो हमें source table लेना है, target table लेना है, उसमें हमें डेटा को क्वेरी करना है. कैसे करना है, लेट्स गो टू टैलेंट नाउ. हियर अब हमें थ्रू आउट दिस जॉब वी नीड ओरेकल कनेक्शन, राइट. टी ओरेकल कनेक्शन, हर बार हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई विल बी क्रिएटिंग अ कनेक्शन एट द प्री जॉब लेवल. टी प्री जॉब, ठीक है. प्री जॉब में हमने इसको कॉल करना है. राइट क्लिक, ट्रिगर ऑन कंपोनेंट. ओके, कनेक्शन के डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देंगे अभी. होस्ट नेम विल बी लोकल होस्ट. यू कैन गिव इट इन दी स्मॉल केस एज वेल. लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 1521. डेटाबेस इज XE. username system, username is system. Password I have given 123. Click on OK. No JDBC connection required. Save. Okay, now the connection is being created. So whether job will be successfully executed or not, that we have to test it first. अगर इस TDB कनेक्शन में कुछ एरर होता है, so it will throw an error. So job is successfully executed, मतलब कनेक्शन बन रहा है. ठीक है. So now we have source table somewhere, right. T oracle input, यहाँ से मुझे डेटा रीड करना है, करेक्ट. So I am going to read the data from source now. So इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ. TDB input है, so I just wanted to change it as source customer view. यहाँ पे लेबल फॉर्मेट है, मैं टेबल का नाम लेता हूँ. ठीक है, मैं सेम वैसा ही नाम देना चाहता हूँ. यू कैन गिव एनी नेम, बट आई वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई दैट इज द सोर्स कस्टमर टेबल विच आई एम रीडिंग फ्रॉम द source, right. So use an existing connection here. Check this. Now you can directly write a query here. Select star from. So I'll write the query and I will show you. So this is my query, right. This is query which is I'm going to put it into this component. So once I put the query here, let me guess the schema first. यहाँ पे हमने use an existing connection कर दिया है, यहाँ पे component select कर देते हैं. ठीक है. Now guess the schema. ठीक है. Let me expand it so you can see that. Customer ID, big decimal, so let me change it to integer. Okay, string, varchar, whatever. Okay, click on OK. Right. First, let me execute this job with these details
it should not have any error here. Okay, row main and connect to t log row, sync columns table view. अब मेरा जॉब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए. करेक्ट. Go to run tab, clear and run. Two records we have into the source, those needs to be displayed onto the console. See, it is displaying the records here, right? So I'll remove this. I have tested this job, it is working fine. So next step we have to check. Okay, we have created a source and we are able to read the data from the source. Now to the second step inside the step 3 is create a dimension, use another tdb input component to load the current records from the dim customer table. Why current only, I will explain. Okay, और एक component हमें बनाना है t oracle input. ठीक है, इसको हमें नाम देना है, ये टारगेट टेबल पे बेस्ड रहने वाला है. ठीक है, डिम कस्टमर, इसका हमें नाम चेंज करना है डिम कस्टमर. ठीक है. सो हियर इनटू दिस स्टेप यू विल सी वी आर रीडिंग बोथ द सोर्सेस, राइट. एक है सोर्स, एक है डिम कस्टमर. dim customer is our target as well as we have to do a lookup onto it, right. क्यों lookup करना है, I will explain. So this will be the query for my dim table. dim table से सिर्फ एक्टिव रिकॉर्ड्स आने चाहिए. यूज एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, कंपोनेंट सेलेक्ट कर दो. नाउ क्वेरी द डेटा ओनली विच इज एक्टिव. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर वेयर इज करंट इज इक्वल्स टू वाई. सिर्फ एक्टिव रिकॉर्ड्स पिकअप करने, बिकॉज यू माइट हैव एग्जीक्यूटेड अ टाइप 2 फ्लो एज वेल इनटू द डायमेंशन. जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीरी टाइप 1 टाइप 2 और एनी डायमेंशन का फ्लो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, even if you are implementing type 1 in future onto that dimension, there is a chance or already there is implementation of type 2 on that dimension has been done, right. इसलिए टेबल में एक्टिव इनएक्टिव रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. तो ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू पिक ओनली एक्टिव रिकॉर्ड. जो भी एक्टिव रिकॉर्ड है वही हमें रीड करने हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव रिकॉर्ड वी कैन चेक सोर्स से जो डेटा आ रहा है वो टारगेट में जो भी प्रेजेंट डेटा है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं, उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं. फॉर रिलेटेड कॉलम्स एससीडी टाइप 1 कॉलम विद द एक्टिव रिकॉर्ड के साथ चेकअप होना चाहिए उसका, राइट. एक ही रिकॉर्ड के मल्टीपल वर्जन्स ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं, राइट. जैसे कि एक कस्टमर मूव पुणे टू मुंबई, मुंबई टू बैंगलोर. करंटली ही इज़ इन बैंगलोर, राइट. सो वी हैव 3 रिकॉर्ड्स इन द टारगेट. सोर्स से आने वाला रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड के साथ वैलिडेट होना चाहिए, दैट शुड बी विद द एक्टिव रिकॉर्ड ओनली, करेक्ट. कि क्लियर एवरीवन. क्लियर. सो दिस इज important factor here we have to understand. To check this against your target table we have to do a lookup here. Now I have to add tmap to do a lookup source to target. Main connect to tmap, dim row main, row main connect to tmap. So your target table will be the lookup. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी I have to guess the schema now. Guess schema. बिग डेसिबल में चेंज करते हुए जा रहा हूँ. I'll be making it as integer. ठीक है.
कस्टमर डायमेंशन की, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एड्रेस, membership level, pre-membership level, start date, end date, and is current. Click on OK. Now I can connect this with tmap. This will be called as lookup. Now go to tmap. Now we can join these two sources on the basis of customer id. ठीक है, सोर्स का टारगेट का कस्टमर आईडी मैच होना चाहिए, तभी हम लोग उस रिकॉर्ड को टारगेट में अवेलेबल है ऐसा कंसीडर करेंगे. अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, इन दैट केस इट मीन्स व्हाट, इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ डेटा, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन टू द टारगेट. इट मीन्स हमें उसका लुकअप वैल्यू नल मिलेगा. इन दैट केस वी कैन कंसिडर दैट इनकमिंग रिकॉर्ड कमिंग फ्रॉम द रो वन, इट मीन्स फ्रॉम सोर्स, इट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, it means from main flow, so that will be considered as a new record. So I'll create a new group, but before that let's check the next step. Configure SCD logic here. हमने सोर्स टारगेट टेबल पे लुकअप लगा लिया, सोर्स से डेटा रीड कर पा रहे हैं, टारगेट पे हमने लुकअप लगा दिया. नो कॉन्फ़िगर tmap for SCD logic. सो मेन फ्लो, लुकअप फ्लो. मेन फ्लो इज सोर्स टेबल, सोर्स से जो डेटा आ रहा है. लुकअप फ्लो डायमेंशन टेबल. नाउ डिफाइन ज्वाइन कंडीशन हियर. नाउ ज्वाइन कंडीशन इज ऑन व्हाट कॉलम, सोर्स कस्टमर एंड डिम कस्टमर का कस्टमर आईडी विल बी दी कॉलम. स्टेप 5 फॉर SCD टाइप 1. टाइप 1 मतलब ओवरराइड करना है टारगेट में जो भी है. SCD टाइप 1 इज यूज्ड. We want to override the existing record in the dimension table with the latest value coming from the source. For instance, if customer name change, we want to simply update the field. यहाँ पे SCD type 1 column is name column. मतलब customer or the requirement is to update the value in the target table if the name got changed or रिक्वेस्टेड द नेम चेंज फ्रॉम सोर्स टेबल. सोर्स टेबल में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का नेम चेंज है जो कि टारगेट टेबल के नेम के साथ मैच नहीं हो रहा है. सो इन दैट केस वी हैव टू ओवरराइड इट. ओके, कंडीशन. सो रो 1 डॉट कस्टमर नेम इज नॉट इक्वल्स टू रो 2 डॉट कस्टमर नेम. Okay, if this is, then what we have to do, we have to update it into the target, right? Connect type 1 output to the TDB output component. So let us see that. Let me create it. Now what groups we have to create here? So what group we have to create? So group जो मैं अभी create करूँगा, that is for new records. New records जो भी target table में जाएगा, that will be for new records. This group is for identifying the only new records. ठीक है. Whenever you wanted to validate a new records or wanted to categorize the new records, this is the group. यहाँ पे हमें new records कर रहे हैं. ठीक है. So new record के लिए कौन से कॉलम रहेंगे? Customer dim key we are not creating in the ETL flow. Customer ID is coming from source. If the record is new, then value coming from the source should be updated or inserted into the target. न्यू रिकॉर्ड है मतलब क्या होना चाहिए? इंसर्ट होना चाहिए, राइट? इंसर्ट होना चाहिए. सो आई बी ड्रैगिंग इट हियर. यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन वगैरह मुझे मेंशन कर रहे हैं. आई बी कंसिडरिंग दिस इज अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन. लेफ्ट आउटर मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे लेफ्ट टेबल से, और राइट टेबल से मैचिंग वैल्यूज़ आएंगे. ऐसा कोई रिकॉर्ड है लेफ़्ट टेबल में जिसके लिए मैच नहीं है राइट टेबल से, उसके अगेंस्ट नल वैल्यूज़ मिलेंगे.
अब जो रिकॉर्ड लेफ़्ट टेबल से मतलब मेन फ्लो से आ रहे हैं, मतलब सोर्स टेबल से आ रहे हैं, SRC _ कस्टमर टेबल से, ऐसे कोई रिकॉर्ड को राइट टेबल में मैच नहीं मिलता है, इट मीन्स दैट रिकॉर्ड इज़ न्यू, दैट्स वाई डिडंट फाउंड अ मैच इनटू द टारगेट टेबल। कस्टमर आईडी पे हमने मैच लगाया, मतलब ज्वाइन लगाया है, राइट। अगर सोर्स टेबल से सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके लिए कोई मैच नहीं मिला टारगेट टेबल, इट मीन्स इट इज़ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस एंड membership level. Now we have couple of ETL columns here, right? membership level, previous membership level, start date, end date and is current date. Now these columns are ETL columns. That means start date, end date and is current, ETL columns. Now here we have to maintain the current and previous membership as well. So I'll be dragging this and I'll be removing this column as of now. ठीक है, let me drag these columns और उनका रेफरेंस मैं निकाल दूंगा। ठीक है, so these are not coming from source, these are not coming from target. I'll be creating only the columns. start date चाहिए, end date चाहिए and current date भी चाहिए। इनका रेफरेंस भी मैं हटा रहा हूँ। If the record is new, then values for customer ID should be coming from source, customer name should be coming from source. So that's why row 1 dot these columns, row 1 dot customer ID, row 1 dot customer name, row 1 dot current address. ठीक है, so now membership level, previous membership level. ठीक है, now if the record is new, it means उसका previous membership रहेगा null and उसका current membership रहेगा coming from the source. यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं पास करेंगे। ठीक है, उसका स्टार्ट डेट क्या जाएगा, एंड डेट क्या जाएगा एंड इज करंट क्या जाएगा। लेट्स चेक द डॉक्यूमेंट। configure TDB output component, this is the next step. Query the data and directly here they are explaining about updating the target table. ठीक है, but what should be my start date, what should be my end date? So let's come to the expression builder here. Talend have lot of date functions here. Talend date, करंट डेट चाहिए मुझे, गेट करंट डेट। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, व्हाट कैटेगरी यू वांट द फंक्शन, टैलेंट का डेट चाहिए मुझे, टू गेट करंट डेट मैंने कर लिया। ठीक है, सो लेट मी क्लिक ऑन ओके। अगर रिकॉर्ड नया है तो उसका स्टार्ट डेट कुछ ना कुछ रहेगा, उसका एंड डेट ऑलवेज नल जाएगा, इज़ करंट बाय डिफ़ॉल्ट वाई जाएगा, लेकिन मैं उसको डिफाइन करूँगा यहाँ पे, so it will be y always. ठीक है, apply. Have any question onto this? Anyone? No, sir. Okay, so this is customer ID, customer name, current address, membership level हमने सोर्स से लिया है, प्रीवियस मेंबरशिप में नल जाएगा बिकॉज दिस इज़ फॉर न्यू रिकॉर्ड। जो न्यू रिकॉर्ड्स आते हैं उसके लिए प्रीवियस मेंबरशिप तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो कस्टमर ही नया है, उसका कोई प्रीवियस मेंबरशिप तो रहेगा नहीं। करेक्ट, स्टार्ट डेट हमने करंट डेट से अपडेट कर दिया एंड एंड डेट जो कस्टमर नया है तो उसका ETL एंड डेट तो रहेगा नहीं, जैसे कि दिस कॉलम इज़ फॉर SRE टाइप 2, राइट। इवन टाइप 2 इम्प्लीमेंटेशन में उसका एंड डेट नहीं रहेगा एज दिस इज़ अ न्यू रिकॉर्ड। ओके,
Now this is apply and OK. You might have one more question that we have customer dim key in the target, but we are not passing it to the target here into the group, because this has been generated by sequence created into the database. Each time the sequence will be generated for each and every new record. Okay, click on apply, click on OK. Now we need the output T Oracle output. This is for new record. Right click, row, new records. Okay, this is dim customers. View dim customer new records. Okay. We need a connection here. Use an existing connection. DB connection. Table name. DB connection. Dim customers. Edit schema. Sync columns. ओके, एडिट स्कीमा करके देखते हैं सारे कॉलम्स हमें मिले या नहीं. नाउ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, करंट एड्रेस, मेंबरशिप लेवल, प्रीवियस मेंबरशिप लेवल, start date, end date is current. Click on OK. Okay, this is the flow for new records. Whenever we will find a new record into the source, we can run this flow and नए सारे रिकॉर्ड्स लोड हो जाएंगे टारगेट में. बट व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टारगेट कंपोनेंट? यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड को सिर्फ इंसर्ट करेंगे जब भी वो आइडेंटिफाइड है कि दिस इज़ अ न्यू रिकॉर्ड. दैट इज action on data insert. Action on data is insert for this component, right? Still we are not validated these are new records or not. So I have to enable this filter and I have to validate that जो incoming जो record आ रहा है customer ID not equals to this customer ID, right? That customer ID not equals to this customer ID. And do we need to give the AND condition here? Yes, this is for new records and if we are implementing SCD type 1, even if there is name change, those records are not validated from here, because पहला कंडीशन ही उन सारे रिकॉर्ड्स को इन न्यू कस्टमर्स ग्रुप में आने से रोक रहा है, right? Even if we are implementing SCD type 1 on the basis of customer name, वो हमें यहाँ पे वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अ सेपरेट ग्रुप दैट फॉर दैट. अगर कस्टमर नेम चेंज है सोर्स टारगेट का, लेकिन उससे पहले क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? इनकमिंग कस्टमर आईडी शुड बी इक्वल्स टू दी टारगेट का कस्टमर आईडी. अगर मैच है एंड कस्टमर नेम अगर डिफरेंट है, इन दैट केस अपडेटेड. लेकिन दिस इज़ फॉर न्यू रिकॉर्ड्स, राइट? न्यू रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ वी कैन वैलिडेट द न्यू रिकॉर्ड्स. कस्टमर आईडी कमिंग फ्रॉम सोर्स इज नॉट इक्वल्स टू कस्टमर्स आर प्रेजेंट इन टू द डायमेंशन टेबल. मैच नहीं हो रहा है कस्टमर किसी भी कस्टमर आईडी से. इनकमिंग कस्टमर आईडी 101 है सोर्स टेबल में, टारगेट टेबल तो पूरा खाली है एज ऑफ नाउ.
इफ़ दिस कस्टमर आई डी इज़ नॉट इक्वल्स टू टारगेट से आने वाले जितने भी कस्टमर आई डीज़ हैं उनके साथ किसी के साथ भी मैच नहीं मिल रहा है, इट मीन द इनकमिंग कस्टमर इज़ न्यू टू द डायमेंशन टेबल. Click on apply, click on OK. Now this flow will understand the incoming records. If is not present into the target table, it means it is new. We have to insert it into the target along with all the columns: customer ID, customer name, customer का current address, membership level, previous membership level, start date, end date, and is current, always, and why for new records. कोई भी कस्टमर नया है, it means that is an active record for it, right? Okay, so this is done now. Let me close the connection. Post job TDB connection. Database is of type Oracle. Apply. Post job में right click, trigger and on component. Okay. Which connection wants to close the connection? Sorry. TDB close the connection. Okay. Right click, trigger, on component. Okay. Connect to the TDB close. कौन सा कनेक्शन क्लोज करना है? Right click, apply. Which connection we have to close? The TDB connection 1. Select that one and save. In the post job that will be getting closed. सारे एक्टिविटी जॉब के ख़त्म हो गए, then it will be getting closed. First, what will be happen into this job? Pre-job में connection create होगा, then it will come to this sub job. Now in this flow customer से data read कर रहे हैं, dim customer से सारा data tmap से lookup की के थ्रू हमने read कर लिया. Here what join we are doing, that is left outer join, left table का join कर रहे हैं, right? Let's come to the source table. Let's check the data. We have these records now. Let me commit if I have any changes here. Select star from dim underscore customer. चेक करते हैं डिम में कुछ डेटा है या नहीं. डिम में कुछ भी डेटा नहीं है, राइट? इफ़ आई सी दिस 101 102, उसके लिए डिम कस्टमर में कुछ भी मैच नहीं मिलेगा. इट मीन्स इट इज़ totally new record, right? If I run this flow, it should insert the record into the target. Let's go to the runtime, clear and run. Hopefully job won't be have any error. Okay, job has been successfully got executed. If you have to observe this flow, सोर्स टेबल से 2 रिकॉर्ड्स रीड हुए हैं, डिम कस्टमर से एक भी रिकॉर्ड रीड नहीं हुआ है, बिकॉज डिम कस्टमर में 0 रिकॉर्ड्स थे, राइट? 0 रिकॉर्ड्स थे. व्हेन टीमैप रीड्स दैट सोर्स टेबल से 2 रिकॉर्ड्स आए हैं, लुकअप टेबल से 0, इन दैट केस जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं उनके लिए कस्टमर आईडी मैच नहीं हुआ है. बोथ आर न्यू रिकॉर्ड्स हियर, राइट? सो इन द टारगेट what records went, those all 2 are new record. अब चेक करते हैं वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए इन. चेक दैट इनटू दी डिम कस्टमर एंड कैसे अपने सारे कॉलम्स अपडेट हुए. सो नाउ डिम कस्टमर डिम की 1 and 2, पहले 1 से स्टार्ट हुआ, देन 2. कस्टमर आईडी 101 and 102, जॉन डो एंड
James Smith, their current address and the current address. Membership level silver gold, जिनका previous membership नहीं रहेगा because these are new customers. Start date is 2nd of January 25, 2nd of January 25. Both doesn't have any previous records, so that's why उनका end date भी यही है, null. Both are active records, right? Y and Y. Now if I execute this flow, again source and dim customer में same ही data है. They will find a match customer 101 and 102 as well, and we don't have any change into the source and a target, right? So we have to validate this flow. In what way? It should not insert or it should not update any records into the target. See, two records we found in the dim customers as well, but we didn't found any new records because this group is only for inserting the new records. Now the next step is to validate a series type 1. If we have any record into the source, if the customer ID matches and उसका name change हो गया, in that case target में उसका name update होना चाहिए. So that's the next step. We have to create the next group below to this, and we have to validate customer ID is equals to customer ID target. It means row2.target, and name coming from source should not be equal to name present into the target. In that case we are going to update the target record. Okay, this is an assignment for you. This is